Hello students, welcome. Welcome to MGM Education. We are now reading CHSE English on examination. English 1 on examination. You know, it is an autobiography written by Winston Churchill. And Winston Churchill was the Prime Minister of England during the period of Second World War and the previous period, right? So his childhood education has been narrated in this lesson. When he was in school, how was his education? That has been depicted here. He was no more a good student. What has been described in the first unit, second unit, right? In the first unit, how examination was a fearful activity for him. Inhospitable regions, he was saying to the examination, means the conditions were not favorable to him. And he has a complaint. What is the complaint? That I have my favorite subjects, history, poetry, essay, and the teachers were often focusing on Latin subject and Greek and mathematics, which I didn't have any knowledge. And they often used to ask me those questions only. And whenever I tried to show my little knowledge, they were trying to depress me. And I passed through a critical time in my education after my 12th birthday. Okay, now what? When he shifted from the Aton to horror school, he has to face an entrance, he has to qualify an entrance to get a seat in the horror school. But what happened when he was given the question paper and the answer sheet to write? Nothing he could attempt at all. He was a white paper and he was just writing the number and his name and then looking up, doing nothing. And the tears came down from his heart, and the attendant has seen what this boy is doing. He is not at all writing anything. After that, he has taken his answer sheet to the table of the headmaster. Headmaster, Dr. Weldon. And Weldon was a very, person who can see the depth of the things. And then he came to know that this boy is not that poor, but he can be successful. So he allowed him in the Harrow School. Next point is described about the roll call in the, Harrow School. And Churchill was very much happy for the way the headmaster treated him. He said credit should go to Mr. Weldon for his, perfect understanding me. So it was then I was joined in the Harrow School. After that, he described something about the roll call. Then the arrangement of register, the names of the students there were set as per the alphabetical order, and this person's name is Spencer Churchill, so begins with S. So he was found to be having his position in the end always. The second of the last. So two other boys who were there, in between they left for health condition and other things, so he is going to be the last. So whenever he has to stand in queue or anywhere, he has to stand in the last. So there are often question comes why this boy is standing, in the back. So this was a little worry. And his father also a political head was there in England, and he was a public figure. And House of Commons, his father, Lord Randolph Churchill, was the leader of House of Commons.
and also a chancellor of exchequer, a noted person in the political front of England in those days. से समय तार बापा बड़ फेमस थिला पॉलिटिकल रे मध्य से गोटे हाउस ऑफ कॉमन होचे हमर जेमती लोकसभा तांको पार्लियामेंट इंग्लैंड रो पार्लियामेंट रो हाउस ऑफ कॉमन रो लीडर से थिला तो से भी केबे केबे स्कूल विजिट करवा का से तो देखि ये पत्थर छिड़ा हुए why this boy was standing in the back. So all these things it shows that his childhood education was not so good. एथरा हम जना पड़छि जे से तारो चाइल्डहुड एजुकेशन किछि बोल नथिला एटन स्कूल रे देखो हेरो स्कूल रे देखो परीक्षा पई तार डर देखो एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे तार परफॉर्मेंस देखो सबुटी से कोन हला वीक बोली निज को प्रमाणित करछि अच्छा एबे कोन हला आ रोल तापरे तारो एबे जेतले हेरो स्कूल रे तो ताको एडमिशन मिल गेला मिलगला पर से पिला मिलगला पर से पिला मन को कौन करा हला ना तांकर स्टैंडर्ड अनुसार कैटेगराइज करा हला गुड स्टूडेंट्स एंड बैड स्टूडेंट्स बैड मींस वीकर स्टूडेंट्स एंड चर्चिल केम ऑन द लिस्ट ऑफ वीकर एंड व्हाट हैपेंड इन द स्कूल द स्टूडेंट्स हु आर वीकर दे वर सेंट फॉर इंग्लिश एजुकेशन एंड द स्टूडेंट हु आर लिटिल स्मार्ट एंड हैविंग गुड स्टैंडर्ड दे वर सेंट टू for learning Latin and Greek. So there will be a distinction. साधारणतः कौन हुए पिला मान को भितर मध्य गोटे फीलिंग्स रहे हाँ भल पिला खराब पिला ये फीलिंग्स रे से निज को टिके ये फील करथला तलवा फील करथला के चर्चिल बोले नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू किंतु सेतबेल को थिला तांकर इंग्लिश टीचर थिले डॉक्टर समरवेल Dr. Somerville would excellent teacher of English. किंतु प्रेस्टिज के भी थिला से ना जे लाटिन पढ़ुला ग्रीक पढ़ुला से मान को हाई फाई और मान को लो कैडर ये फीलिंग्स गुटे चलथिला चर्चिल वाज सिलेक्टेड ही वाज लिटिल ऑफसेट दैट वी हैव दिस पोजीशन गिवन परवर्ती समय रे किंतु चर्चिल सेज दैट वी आर लकी टू हैव दिस क्लास काहे कि ना किछि वर्ष परे एजुकेशन शेष होला बेलको ए लाटिन और ग्रीक रो जो पिला माने सक्सेस हेले से मान तो डिस्टिंक्शन पाइले किंतु इंग्लिश पाई से मानकर गोटे वीकनेस रही गला सो फॉर मेंटेनिंग देयर लाइवलीहुड एंड डे टू डे रिक्वायरमेंट इंग्लिश इज हाईली एसेंशियल से माने सेटा जते बेले जानले पूर्ण चर्चिल पाको आसले दे रिटर्न बैक टू चर्चिल नाउ चर्चिल फील्स प्राउड ऑफ दैट जाहो डॉक्टर समरवेल हु हैज टॉट English in a very excellent way by coding, decoding, dividing the sentences, noun, verb, adverb, adjective, determiner, preposition, article, भिन्न भिन्न खंड खंड करके सेंटेंस को प्रत्येक विषय रे रिवीजन करी करी ड्रिलिंग करी करी they have taught us sorry he has taught us so we became very fluent and expert in English and those whom they considered the good students now came under us came under me बोली कहला से मो पाख आसले पुणी इंग्लिश शिखा इंग्लिश ना डे टू डे रिक्वायरमेंट बहुत आवश्यक अच्छे थर्ड यूनिट रे अच्छी स्विमिंग बोथ गोटे इंसिडेंट एमेरी सहित चर्चिल केमती डिस्प्यूट होता कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली व्हाट हैपेंड दे वर मेकिंग ए लॉट ऑफ फन इन द स्विमिंग बाथ रे So one day what happened, Churchill has seen a boy looking very smaller than him and that boy was with a towel, standing near the swimming pool. By funny, what this boy has done, Churchill, he hold his towel on one hand and pushed that boy into the water. So this became a major matter there. Okay, he thought that this boy is junior. After that what happened, many classmates came and surrounded Churchill and said, do you know who that boy is? You have done like this. तो कैसे जानस तो ताको पानी रे फिंगी देलु कोन चर्चिल ता कहछि नो ही वाज लुकिंग स्मॉलर देन मी देन मु भाबिली ही इज माय जूनियर देखला से तार 2 वर्ष सीनियर सीधा जते जतला झाल फुटी गेला हाँ कौन करी व्हाट शैल आई डू
ଟିକେ ହସା ହସି କରାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଦେଲା ମାଇ ଫାଦର ଇଜ ଆଲସୋ ଲୁକ୍ସ ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ବୋଲି କହିଲା। ସେମାନେ କାଳେ ହସିବେ ପୁରା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲେନି। ସେମାନେ ଆକୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ତାର ହାଇନେସ୍ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ he is in sixth form and he is the head of the house and he is the champion at gym, say Penny, and he has got the football collar. Yeah, how do you estimate that he is a small boy? तापर ताको विभिन्न प्रकार घेराबंदी कले। लास्ट को से कौन कला चर्चिल टिके भयभीत भी हो गला एंड एपोलाइज्ड माने क्षमा मांगला। कोच आई मिस्टेक दिस बॉय इज अप फोर्थ स्टैंडर्ड बट आई डोंट नो ही बिलोंग्स टू द सिक्स्थ स्टैंडर्ड। देखला से सिक्स्थ स्टैंडर्ड ठीक अच्छे। एनी हाउ ए इंसिडेंट आई कंप्रोमाइज होला पर नेक्स्ट लास्ट यूनिट फोर्थ रे से कौन कहि पिला माने तार एंट्रांस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रे अचीवमेंट केमती कला से विषय दर्शाई लास्ट पैराग्राफ रे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय प्रिपेयर होला को लकीली से तार अचीवमेंट पाई जाय छी से कथा से कोच केमती सेतबेले से कोच दिस एग्जामिनेशन सीम्स टू हैव बीन called forth a very special effort on my part बहुत special effort नवा पड़थला for my boys, for many boys far above me in the school failed in it। बहुत लोग फेल ही जाइछन्ते परीक्षा रे। I also had a piece of good luck, किंतु मोर गोटे भाग्य थिला good luck, तेनु कर मु सक्सेस हे गली बोलछि। अच्छा कौन से एग्जाम थिला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आर सब्जेक्ट कौन थिला जियोग्राफी थिला। से ओवरनाइट से दिन रात्रे का फाइनल एग्जामिनेशन प्रिपेयर कला को न्यूजीलैंड विषय रे भल प्रिपेयर करथिला। लकीली से न्यूजीलैंड रो मैप तैयार करिया पाए बोली परीक्षा आसिला। सो एटा कोन हला ताको हेल्प कला जा फल से कोन हला हाई स्कोर रखि पारला एंड हाई मार्क्स रखला राइट एंड इट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बोली कोछि। ठीक अछि स्टूडेंट्स। सो ये हिसाब रे ये एंटायर पाठ रे एटा तुमको लाइन वाइज कोइनी खाली थीम टा एक्सप्लेन कर दो बोले स्टोरी लाइन टा तुम पूरा जान। यूनिट 1 रे तार एजुकेशन रे थिबा डिफिकल्टीज विषय रे ओके तापर एडमिशन इन हेरो स्कूल विषय रे केमते एंट्रेंस रे से भलो परफॉर्मेंस न कले मध्य डॉक्टर वेलडाउन ताको कोऑपरेट करके एडमिशन देला। नेक्स्ट से हेरो स्कूल रे स्टूडेंट्स डिवीजन हला पर आको हेले भी लोग स्टैंडर्ड रे बोली भाव कि इंग्लिश लर्निंग पई पठेले। इंग्लिश लर्निंग रे से बहुत खुशी कहीं डॉक्टर समरवेल टीचिंग उपर से बहुत खुशी एवं से बेस्ट स्टूडेंट माने जो मानते से माने मध्य फेरे आर अधीन को आसते इंग्लिश शिखा। सो ही इज वेरी प्लीज्ड खुशी होता। आउ थार्ड रे पिला माने एमएरी सहित तार मजा मजलिस केमती से पानी ठेलदेला ये डिस्टर्बेंस है कंट्रोल कलो थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट रे तार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर आर्मी पाई बोल से केमती फाइनल एग्जामिनेशन रे सक्सेस हला तार। सो ये सब चैप्टर विषय रे हम पढ़ले ठीक अछि पिला माने। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट ऑल अबाउट Churchill and his education during his school career right। आउ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पाई मो आउट वीडियो करी कहीं पिला माने एटा बेसी लंबा हो जाउछ। ओके thank you very much for watching। Please like and subscribe and share it to among your friends। I will be making more videos like this to help you before examination। Thank you very much। Bye।